A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 11th accountancy. As you know very well, in the last video, we discussed a very important topic of the very important chapter, that is a financial statement of sole proprietorship with adjustment. You know very well, any additional information which are given outside the trial balance, it will be known as an adjustment. And if there is any kind of the information related to goods and service tax inside the trial balance as well as the outside the trial balance, so in this situation we adjusted input CGST with the output CGST, input IGST adjusted with the output IGST, and input SGST adjusted with the output SGST. Is that clear? And you know very well, they are basically various adjustment items like outstanding expense, prepaid expense, accrued income, and advance income, which are also subject to the charge of GST. Out of them, some of the items which are excluded from the GST, and some of the important items which are include the GST. So in this class, in this video, first of all we revise GST on an adjustment item. यानी किस पे जीएसटी चार्ज होगा, किस पे जीएसटी चार्ज नहीं होगा, and thereafter we will move to the practical problem by which we will create a better understanding regarding the goods and service tax while we preparing the financial statement of sole proprietorship. It means when we prepare the trading account, profit and loss account, and balance sheet of the sole proprietorship, in this situation, if there is any kind of information regarding the goods and service tax are given inside the trial balance as well as the outside the trial balance, so how it will be adjusted in the financial statement of sole proprietorship, let's we discuss it. Okay, so let's start today's class. All the best. GST on adjusted item. The next heading, please note down, GST on adjustments items. When we are talking about the GST on adjusted items, so the first one is GST is levied on outstanding expenses. यानी GST किस पे चार्ज होता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पे चार्ज होता है. ओके, हाउ you can see that? Suppose for example, rent outstanding rupees 20,000 and CGST and SGST at the rate of 6% each. ध्यान से समझिएगा इस चीजों को. यानी अभी हमने क्या सीखा? फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी दैट input CGST, input SGST, input IGST, as well as output IGST, output CGST and output CGST को हम कैसे बैलेंस शीट में शो करते हैं. एंड इफ इन एनी ट्रायल बैलेंस CGST और SGST का डिफरेंट बैलेंस गिवन हो, so how we will show in the liability side and the asset side of the balance sheet of the sole proprietorship. Basically it is totally depend on the total of the output GST and input GST. अगर आउटपुट ज्यादा होता है तो लायबिलिटी में शो करते हैं और इनपुट ज्यादा होता है तो एसेट्स में शो करते हैं ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप. इट इज द नेक्स्ट टॉपिक. यहाँ CGST SGST की बात नहीं हो रही है. सपोज इन एनी क्वेश्चन देयर इज अ गिवन इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कि रेंट आउटस्टैंडिंग इज 20,000. ऑलरेडी मैंने इसके बारे में बता दिया कि रेंट इज आउटस्टैंडिंग, सो इसका दो इफेक्ट पड़ता है. देयर आर टू इफेक्ट ऑफ द आउटस्टैंडिंग रेंट. द फर्स्ट वन विल बी रिलेटेड एक्सपेंस में ऐड कर देंगे एंड नंबर सेकंड बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो करें. ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया व्हाट आर द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ द बैलेंस इफेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप. सपोज आउटस्टैंडिंग का तो हमें एडजस्टमेंट पता है. सपोज इन एनी क्वेश्चन देयर इज अ एडिशनल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द आउटस्टैंडिंग रेंट, दैट इज अ GST. यानी उस एक्सपेंस के साथ साथ आपको GST भी पे करना है, GST भी चार्ज है. तो इस सिचुएशन में मैंने एक एग्जांपल लिया. यू नो वेरी वेल GST इज लेवाइड ऑन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. GST तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पे चार्ज होगा ही होगा.
सपोज आपका रेंट आउटस्टैंडिंग है 20,000 जिसपे CGST एंड SGST है 6% के अकॉर्डिंगली। सो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, इसकी एंट्री क्या होगी? सो प्लीज नोट डाउन द एंट्री that is, you know very well what is the entry, that is rent account debit 20,000 and to outstanding rent, but you know very well rent कहाँ होगा? It will be shown in the debit side of PL account। 20,000 से रेंट अकाउंट को ऐड करेंगे, प्लस करेंगे रेंट में, रिस्पेक्टिव एक्सपेंस में, बिकॉज रेंट इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस and outstanding expense will be shown in the liability side of balance sheet। ये तो क्लियर है, बट सर इसके साथ साथ क्वेश्चन में ये भी इंफॉर्मेशन है, दैट इज CGST and SGST। यू नो वेरी वेल CGST and SGST will be debited, so in this situation input CGST debit, input SGST debit, what is the rate of the GST? That is 6% each, 1200 for input CGST and 1200 for the input SGST। So the total outstanding rent will be 22,400। यानी अगर आपका कोई रेंट या कोई एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है तो बेसिकली उस पे जो भी जीएसटी चार्ज होता है इट विल बी शोन, इट विल बी एडेड इन द रिस्पेक्टिव लाइबिलिटी। यानी आउटस्टैंडिंग रेंट अब 20,000 शो नहीं होगा इन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, इट विल बी शोन एज अ 22,400 in the liability side of the balance sheet, but in the PL account सिर्फ 20,000 ही ऐड होगा। Input CGST and input SGST will be increase by 1200 each। CGST में 1200 इंक्लूड हो जाएगा, इनपुट में इंक्रीज कर जाएगा, और 1200 SGST में इंक्लूड हो जाएगा। डोंट वरी, इस पे भी हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी मैं थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझा दूं कि इफ देयर इज एन एनी काइंड ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और अगर उस पे कोई जीएसटी चार्ज है सो इट विल बी इंक्लूडेड इन इट, और उससे हमारी लायबिलिटी भी चेंज होगा, उससे हमारा पीएल अकाउंट का बैलेंस तो चेंज नहीं होगा, बट इट विल बी चेंजेस इन द इनपुट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी रिस्पेक्टिवली। लेट्स वी मूव टू द नेक्स्ट adjustment of GST, that is a GST in case of prepaid expense। You know very well, if we paid the expense in advance, please listen carefully, if we paid the GST in advance, so in this situation GST is also paid in advance। Okay, so suppose when we are talking about the GST in case of prepaid expense, so बहुत ही ध्यान से समझिएगा, GST in case of prepaid expense में क्या होता है? Basically, if we paid the expense in advance, what is our prepaid expense? Any expense which is not due but paid in advance। कोई ऐसा खर्चा जो ड्यू नहीं हुआ है बट हमने उसको एडवांस में क्या कर दिया है? पे कर दिया। इट इज एन GST, इट इज एन प्रीपेड एक्सपेंस। सपोज अगर आपने कोई खर्चा प्रीपेड कर दिया, पहले पे कर दिया, तो जाहिर सी बात है कि उसका GST भी आपने ऑलरेडी पे कर दिया होगा। सो इफ एनी काइंड ऑफ द प्रीपेड एक्सपेंस आर गिवन इन द as an adjustment, so in this situation GST is not to be calculated, GST is not to be calculated on prepaid expense। GST को हम प्रीपेड एक्सपेंस के केस में कैलकुलेट नहीं करेंगे। बहुत ही ध्यान से समझिएगा, क्योंकि GST हम ऑलरेडी पहले ही एज एन एडवांस पे कर चुके होंगे, दैट्स वाई GST को हम फिर से इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके, सो इस केस में एंट्री क्या होगी? क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने GST पे कर दिया है एडवांस में, सो दैट्स वाई सिंपल एंट्री विल बी नोन एज इज अ प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट, बिकॉज यहाँ पे GST इंक्लूड नहीं होगा, बिकॉज GST इज ऑलरेडी पेड। यहाँ पे GST एक्सपेंस इन आउटस्टैंडिंग, एक्सपेंस ड्यू था बट हमने पे नहीं किया था, दैट्स वाई हमने GST को अलग से शो किया और इट विल बी इंक्लूडेड इन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट एज एन आउटस्टैंडिंग रेंट। बट when we are talking about the prepaid expense, so you know very well prepaid expense means any expense which are paid in advance। so you know very well जब हम कोई expense पे करेंगे तो क्या GST नहीं पे करेंगे, GST के लिए वेट करेंगे। सपोज हमने अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल को पहले ही पे कर दिया, एडवांस में पे कर दिया, प्रीपेड कर दिया, तो क्या GST के उस पे आप GST नहीं पे करोगे? पे करोगे, ड्यू डेट से पहले पे कर दिया। सपोज आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना था
सितंबर को, बट आपने उसको 15 सितंबर को ही पे ऑफ कर दिया। तो जब आप 15 सितंबर को या 10 सितंबर को अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करोगे तो क्या जीएसटी नहीं पे करोगे? पे करेंगे। यानी जब उसको हम एडजस्टमेंट करेंगे इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट, तो फिर हम जीएसटी को दोबारा चार्ज नहीं करेंगे, बिकॉज हमने ऑलरेडी उस आइटम पे जीएसटी पे कर दिया है। इज दैट क्लियर? लेट्स वी टेक द वन more item which are related to the GST. Don't worry, we will take the some of the important practical problem related to this topic, that is the GST on adjustment item. So the third adjustment item of GST, that is GST levied on, GST is also levied means charge on income earned but not received, on income earned but not received. You know very well what is the meaning of income earned but not received. That is accrued income. What is accrued income? कोई भी इनकम जो अर्न तो कर ली गई है बट हमें मिली नहीं। सपोज मैंने किसी के यहाँ 1 महीने काम कर लिया, उससे मुझे सैलरी मिलनी चाहिए थी बट वो सैलरी नहीं मिली, सो सच इनकम विल बी नोन एज द एक्रूड इनकम। व्हाट इज एक्रूड इनकम? इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। सो यू नो वेरी वेल इस सिचुएशन में जीएसटी चार्ज होगा। ओके, सो यू नो वेरी वेल एक्रूड इनकम की क्या एंट्री होती है? दैट इज एक्रूड, ये एंट्री मैंने आपको पहले बताई हुई है इन द एडजस्टमेंट, इन द बिगनिंग ऑफ द एडजस्टमेंट क्लासेस। एक्रूड इनकम टू इनकम, यू नो वेरी वेल, इसको हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट साइड में ऑफ पीएल अकाउंट में ऐड कर देते हैं, जो रिलेटेड इनकम होती है उसमें ऐड कर देते हैं। एंड एक्रूड इनकम को हम लोग कहां शो करते हैं? इट विल बी शोन इन द एसेट्स साइड ऑफ बैलेंस शीट। बट यू नो वेरी वेल उस पे हमें जीएसटी भी चार्ज करना है, बिकॉज जीएसटी इज ऑल्सो लेवाइड। सपोज आपको कोई इनकम मिल रही है, उस पे आपको जीएसटी भी मिलेगा, एंड यू नो वेरी वेल व्हेन वी रिसीव द जीएसटी, सो इट विल बी नोन एज द आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी। सो आपका आउटपुट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। ओके, इन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में शो करेंगे। ओके, so accrued income जो हम which we will shown in the asset side of the balance sheet, it will include the output CGST and SGST respectively. इसमें हम लोग GST को भी इंक्लूड करेंगे, as like it is in case of the outstanding expense. Outstanding expense से हम लोग ऐड करते थे ना GST को, yes, in the liability side of the balance sheet. Similarly, when we write down the accrued income in the asset side of the balance sheet, so it includes the GST. Okay, so please do not take any kind of tension. Okay, so let's we move to the next adjustment item related to the goods and service tax, that is the income received in advance. Firstly, what is the meaning of income received in advance? Sometimes any income received in advance by the business, and this will be known as the advance income or accrued income. Advance income or accrued income means income which are not earned, income which are not earned but received in advance. So आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर ये बताइए कि अगर कोई इनकम जो अर्न नहीं हुई है हमने रिसीव कर लिया है, तो उस पर जीएसटी का ट्रीटमेंट क्या होगा? तो बेसिकली उस पर जो जीएसटी का ट्रीटमेंट है वो कैलकुलेट नहीं होगा, एज लाइक इट इज प्रीपेड एक्सपेंस के केस में हम जीएसटी चार्ज नहीं करते थे बिकॉज जीएसटी इज ऑलरेडी पेड। सेम एज इट इज व्हेन वी रिसीव द इनकम इन एडवांस, so GST is already received by the person. Is that clear? So income received in advance के केस में GST is not charged. Okay, so please note down. In this situation, in this type of adjustment,
GST is not GST is not to be to be calculated on such income because GST has already been credited has been already credited. It is clear? GST is not to be calculated because GST has been already credited at the time of receipt of income. At the time of receipt of income. Okay, so I hope it is clear for you. अब देखिए आप लोगों ने मैंने आपको इस आइटम में ये बताया कि जीएसटी ऑन एडजस्टेड आइटम कि कुछ एडजस्टमेंट होते हैं जिसपे भी जीएसटी चार्ज होता है. So if we are talking about the GST on adjustment item, so there are basically four items on which GST is to be calculated. The first will be a outstanding expense. Second will be a prepaid expense. अगर outstanding expense and prepaid expense as an adjustment given हो outside the trial balance and these expenses are due with GST, इसके साथ GST भी applicable हो, so situation में हम क्या करते हैं ये यहाँ पर हमें डिस्कशन करना है. So the third one is the accrued income. Sorry for that, this is an unaccrued income. Okay. Number last one is the unaccrued income. So outstanding expense, prepaid expense, advance income, accrued income. Unaccrued income के केसेस में हम जीएसटी कैसे चार्ज करते हैं, यू नो वेरी वेल. जीएसटी प्रीपेड एक्सपेंस के केस में और अनअक्रूड इनकम के केस में क्या होती है, नॉट चार्ज. जीएसटी नॉट कैलकुलेटेड. But in case of outstanding expense and accrued income, because outstanding expense are the expense which are due but not paid, accrued income which are earned but not received, इस सिचुएशन में आपको जीएसटी चार्ज करना ही पड़ता है बिकॉज जीएसटी अभी आपको मिला नहीं है. बेसिकली ये कॉन्सेप्ट आपको अपने दिमाग में याद रखना है. सो इन केस ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस GST is to be calculated. Okay, GST कैलकुलेट करना पड़ता है, should be calculated. अब इस पे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा. ओके, so please note down all these adjustment in your copy properly, क्योंकि मैंने ये समरी भी बना दिया लास्ट में ताकि आपको क्लियर रहे. ओके, so after discussing a lots of adjustment which are subject to the charging of the GST, that is the goods and service tax, let's we take the one example for creating a better understanding regarding a GST as an adjustment. So suppose in any question there is a given information related to the goods and service tax. Okay, so let's we discuss about it. Suppose in any question in the trial balance there is following information are given. So this is a trial balance. Okay, in the trial balance the information are given as follows. That is, the first information is input CGST 15,000, input CGST 15,000, out input SGST also given 15,000, as well as the output CGST and output SGST are as follows. That is, output CGST is a 25,000 and output SGST is 25,000. Apart from this, rent rupees 40,000 is given.
So it is a extracted trial balance. It means it is a uh, incomplete trial balance is given in this question. बस आपको जीएसटी का एडजस्टमेंट यहाँ पे पूरी तरह से क्लियर करना है. Okay, so these are the information: input CGST, input SGST, output CGST, output SGST, and rent. And the adjustment are given as follows. The adjustment are: rent is payable, rent is payable rupees 4,000 per month. यानी रेंट हर महीने कितना आपको पे करना है, that is the 4,000 per month. As well as the additional information are also given. Outstanding rent is subject to levy CGST and SGST at the rate of 9% each. यानी रेंट हमें देना है 4,000 पर मंथ के हिसाब से, और आउटस्टैंडिंग रेंट जो है वो सब्जेक्ट टू लेवी, यानी उस पर चार्ज होना चाहिए क्या, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी कितने परसेंट से, 9% से चार्ज होना चाहिए. So while we preparing the profit and loss account, when we prepare the financial statement of sole proprietorship, so इस क्वेश्चन का, इस एडजस्टमेंट का सॉल्यूशन कैसे होगा, बिकॉज यू नो वेरी वेल रेंट इज अ पार्ट ऑफ पीएल अकाउंट एंड आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी हो, चाहे इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी हो, ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट. तो इसमें हमें दो चीजें ही प्रिपेयर करनी है. फर्स्टली द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड नंबर सेकंड इज बैलेंस शीट ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप. तो मैंने दोनों का फॉर्मेट आपके सामने प्रेजेंट कर दी. You know very well what is the format of PL account, that is particulars amount, and what is the amount of format of the balance sheet, that is liabilities and amount and assets and amount. Okay, so you can see that rent is 40,000. Rent अभी तक firm ने कितना पे किया है, that is a 40,000. So firstly we write down the rent 40,000. Okay, and according to the information rent is payable at the rate of 4,000 per month. रेंट हमें कितना देना है, 4,000 रुपए महीना. तो 12 महीने का हमें कितना पे करना है, 48,000. इज दैट क्लियर? यानी हमें रेंट कितना पे करना है, 48,000. हाउ? 12,000 4,000 multiplied by 12, that is 48,000. It means outstanding rent will be a 8,000. Is that clear? So outstanding rent आपका कितना होगा, 8,000. बट यू नो वेरी वेल आउटस्टैंडिंग रेंट पे क्या चार्ज होने वाला है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी. तो व्हाट इज द एडजस्टमेंट एंट्री, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि क्या एंट्री होती है. ओके, सो द एंट्री ऑफ आउटस्टैंडिंग रेंट विल बी आउटस्टैंडिंग रेंट एंट्री विल बी अ रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट. सो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ रेंट, 8,000, बिकॉज ऑफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट इज 8,000, यानी पीएल अकाउंट में रेंट में कितना ऐड होगा, ओनली 8,000. एंड उस पे क्या लगने वाला है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, क्योंकि जब आप रेंट पे करोगे तो सीजीएसटी एसजीएसटी आप पे करोगे, और जब भी आप जीएसटी पे करते हो तो उसके आगे कौन सा प्रीफिक्स यूज होता है, दैट इज इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी. एंड व्हाट इज द रेट ऑफ इनपुट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, दैट इज 9%, दैट इज 720 एंड 720, एंड टोटल वैल्यू इज 9,440. So your outstanding rent will be shown in the liability side of the balance sheet is 9,440. यही मैं समझाना चाह रहा था एडजस्टमेंट आइटम, कि आपकी लाइबिलिटी होगी 9,440 रुपए की. तो देखा आपने बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में क्या लिखा है, दैट इज 9,450 एज अ लाइबिलिटी. इज दैट क्लियर? एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दी सीजीएसटी एसजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी, so now you can see that your output CGST is greater than the input GST. जो आपका output CGST SGST है और input CGST SGST है वो उसके कंपैरिजन में ज्यादा है, यानी आउटपुट ज्यादा है इनपुट कम है. सो जब आउटपुट ज्यादा होता है हम किस साइड लिखते हैं, इन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट. बहुत ही ध्यान से देखिए, बहुत आराम से. पहले मैंने जितना आउटस्टैंडिंग रेंट का पार्ट था उसे हमने रेंट में ऐड कर दिया, दैट इज 48,000. कैसे, 8,000. कैसे 8,000, 4,000 पर मंथ के हिसाब से देना था 48,000, बट हमने पे कितना किया, 40,000. तो 8,000 हमें और पे करना चाहिए था, तो 48,000. बिकॉज यू नो वेरी वेल आउटस्टैंडिंग रेंट को हम लोग रिस्पेक्टिव एक्सपेंसेस में ऐड कर देते हैं. आई होप इट इज क्लियर. नंबर सेकंड इज, जब हमने ये एंट्री पास कर दी तो वी फाइंड आउट कि
हमारी लाइबिलिटी कितने से इंक्रीज हो रही है, दैट इज 9440। क्यों? क्योंकि आपको 8,000 रुपए रेंट देना है और जीएसटी का 720 एंड 720 टोटल मिलाकर देना है, यानी आपको कितना पूरा पे करना है जीएसटी, दैट इज 9440 रुपीज आपको पे करना है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होने चाहिए। अब आते हैं, इन सबको शो करना है, इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी को हम कहाँ शो करते हैं, जिसका बैलेंस ज्यादा होता है। आउटपुट जीएसटी की वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू द इनपुट जीएसटी, so output GST will be shown in the liability side of the balance sheet. So हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आउटपुट सी जीएसटी आपका कितना है, आउटपुट सी जीएसटी है आपका 25,000 और उसमें से माइनस करेंगे इनपुट सी जीएसटी, यू नो वेरी वेल। बट इनपुट सी जीएसटी पहले कितना था, 15,000, अब और कितना इंक्रीज हो गया, 720, यही मुझे आपको समझाना था। नाउ योर इनपुट सीजीएसटी विल बी 15,720, 15,000 पहले था, 720 अभी बढ़ गया ड्यू टू द आउटस्टैंडिंग रेंट। सो आप इसमें से माइनस कितना करोगे, 15,720 रुपीज आप डिडक्ट करोगे। सो योर आउटपुट सीजीएसटी आफ्टर एडजस्टिंग द इनपुट सीजीएसटी दैट इज 9,280. Okay, same as it is when we are talking about the output SGST. So you know very well output SGST भी कितना है, 25,000। उसमें से भी जब आप माइनस करोगे इनपुट SGST, तो पहले इनपुट SGST कितना था, 15,000, 720 आपका SGST भी बढ़ गया, सो 15,720 आप माइनस करोगे, नाउ आपका आउटपुट SGST होगा 9,280 रुपीज। आई होप इट इज क्लियर कि जितना आपका आउटस्टैंडिंग रेंट पे जीएसटी इंक्रीज होगा उतना ही आपकी जीएसटी की वैल्यू इंक्रीज हो। ओके, आई होप इट इज क्लियर फॉर यू। लेट्स वी टेक द वन मोर एग्जांपल इन रिस्पेक्ट ऑफ द इनकम। ओके, सपोज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने ये, आई होप इट इज क्लियर फॉर यू। लेट्स वी टेक द नेक्स्ट एग्जांपल। सपोज अगर हम बात करें कि क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, इनपुट सीजीएसटी 25,000, इनपुट एसजीएसटी 25,000, आउटपुट सीजीएसटी इज ऑफ 15,000, आउटपुट एसजीएसटी इज 15,000 एंड commission is not your income in this case, it is your expense, that is 10,000 and the adjustment are as follows। मैं आपको एडजस्टमेंट थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूं, ये तो आपने सॉल्यूशन देख लिया इसका। Suppose if we are talking about the commission is 10,000 and the adjustment are commission earned but not received rupees 2,000। क्वेश्चन में लिखा है कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव, ये कमीशन जो आपने अर्न तो कर लिया लेकिन आपको मिला नहीं, कितना नहीं मिला है, 2,000। ओके, which are subject to levy CGST and SGST at the rate of 8% each। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कमीशन आपने अर्न किया लेकिन आपको रिसीव नहीं हुआ, कितना, 2,000, which are subject to levy, जिस पे CGST चार्ज होगा और SGST चार्ज होगा कितना परसेंट, 8% हर। So in this situation, you know very well commission will be right down the credit side of the PL account because it is an income. So commission कितना है, 10,000। उसमें कमीशन अर्नड है बट रिसीव नहीं है, इट इज एन एक्रूड कमीशन। ये किस तरह का कमीशन है, इट इज एन एक्रूड कमीशन। सो एक्रूड कमीशन कितना है आपका, 2,000। सो द कमीशन क्रेडिटेड इन द PL अकाउंट दैट इज 12,000। इज दैट क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, याद होगा आपको, मैंने बताया था इसकी भी जर्नल एंट्री इन केस ऑफ द एक्रूड कमीशन। एक्रूड कमीशन के केस में यू नो वेरी वेल द जर्नल एंट्री विल बी दैट इज accrued, that is commission account debit to accrued, okay, journal entry will be accrued commission account debit to commission, और कमीशन कितने से इंक्रीज होगा, that is 2,000। you can see that कमीशन को क्रेडिट किया 2,000 से, so it will be created in the profit and loss account 2,000
and accrued commission will be a debited. So accrued commission आपका कितना होगा, because you know very well जब आपको ये कमीशन मिलेगा तो उस पे 8% जीएसटी भी चार्ज होगा, एंड यू नो वेरी वेल जब भी जीएसटी रिसीव होता है इट विल बी टर्म्ड एज द आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी. ओके, so we created the output CGST and output SGST, that is 8%. 8% is 160, 160, and total accrued commission will be 2320. So the total accrued commission will be 2320. So now when we prepare the balance sheet, क्योंकि पीएल अकाउंट तो आपको दिख ही रहा है सामने कैसे बनाते हैं, कमीशन में हम लोग accrued commission को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं. Okay, so that you know very well accrued commission is an asset because commission जो मिला नहीं है, कितना नहीं मिला है 2000, बट उस पे जीएसटी भी तो मिलने वाला है कितना 320, 160 एज आउटपुट सीजीएसटी, 160 फॉर एज आउटपुट एसजीएसटी. सो द accrued commission is 2320. अब यहाँ बात करते हैं, हमने कमीशन का एडजस्टमेंट तो कर दिया, पीएल अकाउंट में भी कर दिया और बैलेंस शीट में भी कर दिया. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दी इनपुट जीएसटी एंड आउटपुट जीएसटी कैसे करेंगे. तो यू नो वेरी वेल इसमें ग्रेटर पार्ट किसका है, इससे पहले वाले एग्जांपल में ग्रेटर पार्ट आउटपुट का था इसलिए हमने लायबिलिटी में शो किया था, बट इन दिस क्वेश्चन हमारा ग्रेटर पार्ट किसमें है, इनपुट से रिलेटेड है. सो इनपुट जीएसटी विल बी शोन इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट. इज दैट क्लियर. सो यू नो वेरी वेल हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे इनपुट सी जीएसटी कितना है 25,000, उसमें से माइनस करेंगे आउटपुट सीजीएसटी को, बट यू नो वेरी वेल आउटपुट सीजीएसटी पहले था 15,000 रुपए 15,000, बट उसमें इंक्रीज हो गया 160 रुपीज, तो हम लोग माइनस करेंगे 15,160 रुपीज. सेम एज इट इज आउटस्टैंडिंग केस की तरह से ही हम एक्रूड कमीशन में भी जीएसटी को इम्प्लीमेंट करते हैं. उसी तरह से सेम एज इट इज इनपुट एस जीएसटी इज 25,000 एंड आउट ऑफ देम वी डिडक्ट आउटपुट सी जीएसटी, बिकॉज एसेट्स में इसलिए लिख रहे हैं बिकॉज आउट इनपुट की वैल्यू आउटपुट के कंपैरिजन से ज्यादा है. सो 15,000 प्लस 160, सो वी डिडक्ट 15,160. सो जो बैलेंस अमाउंट है इट विल बी शोन इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप. इज दैट क्लियर. सो यू कैन सी दैट द बैलेंस अमाउंट विल बी 9,840, 9,840. Okay, so these are the example by which we can easily understand the concept of goods and service tax on the adjustment item, how we will charge the GST on the outstanding expense and the accrued income, because you know very well prepaid expense and advance income पे तो GST charge ही नहीं होता at the time of the preparation of the financial statement of sole proprietorship. So when we prepare the PL account or balance sheet with the adjustment of the outstanding expense and accrued income including the GST, so in this situation सिर्फ आपका accrued income that is commission या outstanding expense जैसे रेंट में ही इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसका इफेक्ट आपके जीएसटी के वाले पार्ट में पड़ता है जब आप सेट ऑफ करते हो आउटपुट सीजीएसटी को इनपुट सीजीएसटी से, आउटपुट एसजीएसटी को इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी से. उसी तरह से सेम एज इट इज एप्लीकेबल इन द केस ऑफ द आईजीएसटी. ओके, सो प्लीज नोट डाउन ऑल द एग्जांपल इन योर कॉपी प्रॉपर्ली, बिकॉज जब हम बड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो ये सारे छोटे छोटे एग्जांपल्स आपको काफी हेल्प करेंगे. इज दैट क्लियर. So I hope today we cleared all the topics very easy. Apart from this, if you have any kind of doubt or suggestion regarding this video, please ask me in the online classes as well as in the WhatsApp group. आज के लिए इतना ही. Thank you. Thanks a lot and take care.